Lovely September ended after giving a lot of rain to all. Well, this weekend, Shanvika enjoyed a lot as she went out in Nani's house and had a great fun in the park. Well, she loved to go at such places. Hey everyone, today's video is about this candle lantern which is very easy to make, and the material is waste Dabur Honey bottle and jute rope. And these wax candles I taught you in my previous video. If you want, you can check that out and learn how to make them very easily. You have to keep them inside. So let's get started. सबसे पहले आपको इस हनी बॉटल को खाली करके इसके स्टिकर्स को नीटली हटाना है और उसके बाद इस तरह से फेविकॉल स्टिक करना है ताकि जो जूट रोप हम लगाएं वो इससे इजीली हटे नहीं। अप्लाई करने के बाद यू टेक दैट जूट रोप एंड रैप इट अराउंड। इसके बाद हम इसका हैंडल बनाएंगे। इस रोप को डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस पर फेविकॉल अप्लाई करना है और उसके बाद एक दूसरी रोप लेकर उसे इसके चारों तरफ सर्कुलर वे में रैप करना है लाइक दिस। The length of the handle is up to your choice. I have taken this standard length so that you can hold it very easily when you want to keep it from one place to the another. बॉटल के दोनों साइड्स पर फेविकॉल स्टिक करने के बाद हम इस रोप के हैंडल को इस तरह अटैच करेंगे और एक दूसरी रोप लेकर इसके चारों तरफ फेविकॉल अप्लाई करके उसको रैप करना है। इसी तरह हम बाकी बॉटल्स को भी रेडी कर लेंगे। आप इसके एम्प्टी पार्ट पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ग्लास पेंटिंग भी कर सकते हैं। मुझे ये ब्लैंक ज़्यादा सुंदर लग रहे थे बिकॉज आई एम गोइंग टू कीप दीज कैंडल्स इनसाइड। दीज आर हैंडमेड कैंडल्स एंड इफ़ यू वांट टू सी हाउ डिड आई मेक इट यू कैन चेक माई अदर वीडियो. There I have shown the full demo of making these pillar candles, and here this candle I'm going to decorate it a little more, so I'm putting this wall putti. I have taken this stencil and I'm applying this wall putti on it, and after this I will remove it and you will see a beautiful design on it. You can also draw any other design, you can paint it, you can write any other code on it. It's totally up to your choice. I'm making this stencil design over here.
after removing the stencil, this is how it is going to look. I made a star over here, and you see these are the candles which we are going to put inside in these jars, and this is the final look and how beautiful they're looking like. So whenever you find these Dabur Honey bottles in your house, don't throw them away, utilize them, make this beautiful home decor item, which is very cost effective and very easy to make. You will hardly spend your half an hour in making these beautiful DIYs. So thank you so much for watching this video. I hope you like it. Please subscribe my channel. Thanks for watching.